Just a minute. We'll start within 2 minutes. Okay. So we want to implement the delete operation, right? So for that, what will be the steps? मतलब हम कौन से steps follow करेंगे एक बार देख लेते हैं पहले. After that, we'll start coding, right? So as usual, suppose the first one is our XML, right? Second one is main activity, and the third one is our helper class. Whenever the user will click on the delete button, what will be done? It will call its onClick method, right? onClick listener में onClick method है, वहाँ पे redirect होगा. Inside this onClick method, what we will do? We'll call our helper class method, which is delete, right? In actual, the deletion process will be done in our helper class. Okay, so we'll call it from our main activity. So inside our helper class, we have to call the delete method. Now, there are two things which you can do with the delete method, button, right? One is that you can delete all the records. Okay. The second one is that you can delete the specific record. Now, for deleting the specific record, what you need to do, you have to get some unique value from user, like, right, with the help of which you can delete. For example, in our case, there are three fields: ID, name, and marks. So we can fetch ID, right, as it will be unique. So we can fetch ID from the user, that will be redirect, we get in main activity, and from main activity when we will call this delete method, will pass ID. ठीक है, तो ये ID लेके जाएगा यहाँ पे हेल्पर में. ID के हेल्प से वो पर्टिकुलर रो को आइडेंटिफाई करेगा, एंड आफ्टर दैट इट विल डिलीट इट, राइट. डिलीट करने के बाद क्या करेंगे हम? एज यूजुअल विल सेंड वन एक्नॉलेजमेंट, मतलब एक्नॉलेजमेंट मैसेज या फिर कंफर्मेशन मैसेज भेजेंगे टू द मेन एक्टिविटी, एंड आफ्टर दैट मेन एक्टिविटी विल डिस्प्ले to the user that whether the specific record is being deleted or not, like that. Okay, so this will be our whole process. Let's start with it. So XML में already हमने बटन रख दिया है, right? delete बटन, ठीक है, उसका नाम है बटन delete. तो let's go to the main activity and let's create one on-click listener. delete dot set on-click listener, new view dot on-click listener. So we have created our on-click method, right? Now inside this on-click method, we'll call the delete method of helper class, but there is there isn't any delete method yet, right? हमने तो create ही नहीं की है. So what we need to do, first of all you have to create the method. So let's create one public, as it will send some confirmation. So उसके लिए boolean ले लेते हैं, right? boolean delete करके एक method create करते हैं, and inside that we'll get our ID. We don't require any other things, right? In parameters, only ID. So string ID. Now, as we want to work with the database, we have to create one object of it, as I have mentioned each and every time, right? अगर ऐसा नहीं करना है तो आप यहाँ पे ऊपर create कर सकते हैं. You can use the same data, मतलब database object, right? So as we have not created it outside, we are creating this in particular method, right? So हमें database में से record delete करना है, so we have to call the writable database method, right? What you need to do, you already have the ID, right?
हमारे पास आईडी तो ऑलरेडी है, तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है. वी कैन डायरेक्टली कॉल द डिलीट मेथड. Okay, and we can do that with the help of our object of database. So db.delete. Now inside this delete method, we can pass three parameters. The first one is string table, मतलब table name. So our table name is stored inside this t name string, right? So we can pass that t name. Now the second parameter is where clause, जैसे हमने अपडेट में किया था. ठीक है, कौन सी पर्टिकुलर कॉलम को लेके आप वेयर कंडीशन अप्लाई करना चाहते हो, लाइक दैट. सो आई वांट टू अप्लाई इट विद द हेल्प ऑफ आईडी. सो इन डबल कोड id equal to question mark, right? And after that we have to pass this particular id which we get in parameters, right? मतलब उसके ब्रैकेट में जो है वो. So that will be passed in our string array. So string array and id, right? And we are done with it. Just a minute. Okay, we'll create a new string array, right? इतना हो जाने के बाद ये कुछ कंफर्मेशन मैसेज सेंड करेगा ये मेथड कि whether the database is updated or not, like that, right? So to store that will require one variable, right? So I'm taking a variable integer a. अगर हमारी वैल्यू 0 से कम है, ठीक है, that means the record is not deleted. If the value is greater than 0, that means the record is deleted, right? So let's write if condition for it. अगर आपको इस तरीके से इफ कंडीशन नहीं लिखनी है तो क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ये ए की वैल्यू है वो यहाँ पे पास कर दो बुलियन की जगह पे इंटीजर, एंड जस्ट कैच दैट इन मेन मेमोरी, सॉरी मेन एक्टिविटी, and over there you can write this particular statement. So number of statements will be less, right? So if a value is greater than 0, at that time you can return true, जैसे हम हर बार करते हैं, right? एक मिनट, I already have written the code. I can copy the same, right? अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है then you can return it, मतलब return true or else return false, right? Now let's go to the main activity. Over here we can call this particular delete method with the help of helper class object, right? As it's inside helper.java file. So हमारा helper class का object है mydb, right? So I can call it like this, mydb dot delete, right? And inside this I have to pass id. So id underscore text will provide us id dot get text. उसका टेक्स्ट गेट किया एंड उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा देते हैं. इसने कुछ भेजा है हमें, इस मेथड ने बुलियन वैल्यू, राइट? सो टू स्टोर दैट वैल्यू विल रिक्वायर वन बुलियन ऑब्जेक्ट, बुलियन b equal to, right? Now inside this display, if b की वैल्यू ट्रू है then will show some toast message. तो टोस्ट की सिंटैक्स है भी हमारे पास ऑलरेडी, तो ये कॉपी कर लेते हैं, डेटा डिलीटेड, राइट? ये सारी चीजें हम बार बार ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल में करते हैं. सो आई गेस यू नो दिस. एरर इन डेटा एंड वी आर डन विथ इट. ठीक है, पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई. मैम इक्वल टू ट्रू करना कोई वांधो नहीं आवे. डायरेक्टली बी લખો તો પણ ચાલશે. હા, that is also as it's a boolean only, right? So you can pass directly also, that's okay. એક એક્સ્ટ્રા કમ્પેરેટર ને લાઈક વચ્ચે નહીં આવે ને સર્કિટ્સ માં, તો એટલું અરે એ નહીં લખો તો બી ચાલશે. હા, એ નહીં લખો તો બી ઓકે છે, લખ્યું છે તો પણ કઈ વાંધો નહીં આવે. ઓકે,
એઝ ઇટ્સ ઓલરેડી ઇન બુલિયન તો તમે ડાયરેક્ટલી ચેક કરાવી શકો કે ટ્રુ છે કે ફોલ્સ છે. સો દેટ્સ ઓકે. ઓકે, પહેલા જોઈ લઈએ કે આપણી પાસે કેટલા ડેટા છે. ધેર આર ટોટલ 5. ઓકે, સ્ટીલ ઇટ્સ launching. ઓકે, this હા. So let's see. There are total 5 IDs, 1, 2, 4, 4 records, 1, 2, 4 and 5, right? So we can delete any of it. Just we need to pass the ID. So let's pass ID number 5 this time, right? 5. Let's click on delete button and you can see the toast data deleted, and let's fetch the data. So 1, 2 and 4, that is not ID number 5, right? अब ऐसा करते हैं, ये जो आईडी है ना उसके अलावा बाहर की मतलब 1, 2 एंड 4 के अलावा और कोई आईडी देते हैं. ठीक है, लेट्स गिव द आईडी नंबर 1111. ठीक है, एंड लेट्स ट्राई टू डिलीट इट. So as you can see the toast message, error in data deletion. Okay, why? Because there is no such ID, right? So this is the process. ठीक है, so you have to implement the delete method. I'm sharing this helper and main activity with you. Okay, कॉपी पेस्ट मत करना. Just, आपके रेफरेंस के लिए कि जिससे पता चले. ID number D20 DCS 183 and 181 will not be able to attend the lab due to electricity issue. Okay, right? Implement the delete method and let me know once you get done with it. Okay, and share your snapshots in the chat box, so I'll get to know that you have completed it. That is for data insertion or deletion, या फिर जो डेटा डिलीट कर रहा है वो डिलीट करने से पहले दिखा रहा है. बता रहे हो? हम्म? मुझे बता रहे हो आप? हाँ, आपको ही पूछ रही हूँ मैं. हाँ, आपने स्क्रीनशॉट शेयर किया ना? हेलो. हाँ. हाँ, Am I बोलो. audible? यस यस. ओके. सो ये आपने डेटा करके दिखाया है स्टूडेंट आईडी 1 मार्क्स 11 करके, तो वो इंसर्शन के लिए दिखा रहे हो या फिर डिलीट जो करेगा वो डेटा वो पहले एक बार डिस्प्ले करता है वैसे? नहीं, वो डिलीट के पहले वो मैं भी उसमें ऐसा सोच रहा था कि नीचे एक बटन डाल दूं कि आप आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ऐसा मतलब. अच्छा, हाँ, यू कैन डू दैट. अलर्ट डायलॉग रख लो, हाँ, उसको डिस्प्ले करे एंड ओके करे, बाद में आप डिलीट का क्वेरी परफॉर्म करो ओके के यस ऑपरेशन पे वैसे. यस यस. ओके. बाय द वे, जिन लोगों का हो गया है वो लोग इंसर्ट, अपडेट एंड शो के साथ और भी मतलब थोड़े बहुत वेरिएशन ट्राई कर सकते हैं इवन विद डिलीट. ठीक है, तो लाइक शो के साथ कैसे कर सकते हैं, जैसे आई गेस पहले भी बताया था मैंने कि पर्टिकुलर डेटा शो करे वैसे. ठीक है, देन डिलीट में अभी हमने सिंगल रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए देखा दैट हाउ वी कैन डू दैट. like try for deleting all the records at a same like a single time. You can delete same records, right? एक time में. So try to do that.
doc file, you can find the link of your Google form. अभी मैं चैट बॉक्स में अपलोड करी हूँ, पर इन केस बाद में कभी ओपन करना हो तो इट्स देयर ओनली. ठीक है, यू कैन find that over there. So upload your practicals in this, and you have to upload each and every practical separately. Okay, students, your attendance is being recorded, so if you wish to leave the meeting, you can just submit your practicals by first. Okay, and you have to submit you have to submit up to practical number 9. Thank you, sir.